हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑन माय चैनल। आई नो आई वाज मिसिंग फॉर सो मेनी डेज। बहुत दिनों से मैं गायब थी। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में। आई वाज लिटिल बिजी और इन्वॉल्व विद दोज थिंग्स। मैं रेगुलरली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपडेट्स करते रहती हूँ। आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इट्स #mom_I_am_home या फिर @mom_I_am_home। फर्दर लाइफ अपडेट्स आई विल गिव यू इन सम अदर वीडियो। आज का वीडियो इज अबाउट द अनाउंसमेंट ऑफ द गिफ्ट्स दैट आई एम गोना गिव अवे। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अमेजिंग गिफ्ट्स आप लोग सबके लिए। एंड शुरू करने से पहले मैं आप लोग सबको नवरात्रि, दुर्गा पूजा एंड दशहरा की बहुत सारी विशेस देना चाहती हूँ। लॉट ऑफ हैप्पी विशेस फॉर यू फ्रॉम mom_I_am_home। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आई एम विद्या। आई मेक वीडियोस ऑन किड फ्रेंडली फूड, पेरेंटिंग और बच्चों की एक्टिविटीज। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट। सो जैसा मैंने पहले बताया था, विनर्स विल बी इन डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। और गिफ्ट्स भी जो हैं वैसे ही हैं। कुछ गिफ्ट जो है मैंने हैंड पिक किए हैं, बाकी जो है they are sponsored by my sponsors and I want you to meet my sponsors. They are Read Again Books and Mom's World India. It's my humble request that please do follow them on Instagram. They have like amazing products and मैं अभी आप लोगों को जब गिफ्ट भी दिखाऊंगी you will come to know that they are really amazing. Their links I have given in the description box below. You can check them out. Read Again Books is a humble and eco-friendly initiative by a woman named Nadia. She is also a doctor and you can follow her on Instagram at Read Again Book. और आपको वहाँ पर variety of books मिलेंगे, new books, pre-loved books as well as imported books, mostly from UK publishing houses. And these books are for the age group 1 to 8 years. They are board books, they are hardcover books as well as paper books. Then my next sponsor is Mom's World India. This is an online baby store. Here you will find a range of baby products which are actually very useful as well as very economical. You can find cute diaper bags, feeding kids and bathing essentials as well as cute little teasers and many more things. You can follow them at Mom's World India. तो इन दोनों ही स्पॉन्सर्स ने बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स भेजे हैं आप लोगों के लिए फॉर गिव अवे। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर। तो जो पहला एज ग्रुप है दैट इज फ्रॉम इन्फेंट न्यूबॉर्न टू 2 years ऑफ एज। एंड उस एज ग्रुप के लिए जो गिफ्ट्स मॉम्स वर्ल्ड इंडिया ने भेजे हैं, देयर इज अ बेबी फूड मिल। ये एक 2-piece मैश एंड सर्व किट है एंड इसमें आप मैनुअली ग्राइंड कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। इट इज वेरी इजी टू कैरी एंड यू कैन टेक इट फॉर योर ट्रैवल्स ऑल्सो। And you can mash anything from fruits to boiled vegetables to rice or khichdi. Next product from Mom's World is a baby food nibbler. ये एक तरीके का एक mesh होता है, छोटा सा mesh। इसके अंदर आप जो भी चाहे fruit या vegetable जो है बच्चों को उसके अंदर डालकर you can just give them for nibbling. उससे जो छोटे छोटे mesh या holes रहते हैं उसमें से juices जो है बाहर आ जाते हैं and the baby can suck on it. Mushy food जैसे boiled potatoes वगैरह भी आप इसके थ्रू बच्चों को फीड करा सकते हैं। नेक्स्ट गिफ्ट इज अ क्यूट टीदर। दिस इज अ स्ट्रॉबेरी शेप टीदर एंड इसमें जो है सरफेस पे कुछ टेक्सचर भी बने हुए हैं। बच्चों की जब टीदिंग होती है तो उन्हें बहुत टेंडेंसी होती है टू बाइट ऑन थिंग्स, तो ऐसे टाइम पे यू कैन जस्ट गिव इट टू देम। इसके अलावा भी और भी डिफरेंट शेप्स में टीदर आते हैं। यू कैन फाइंड इट ऑन देयर इंस्टाग्राम। नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट और गिफ्ट इज अ बेबी बॉटल फीडर विद अ स्पून। ये बहुत ही अमेजिंग होता है स्पेशली ट्रैवल्स के लिए, जब बच्चों को आपको होममेड सेरेलैक वगैरह फीड कराना होता है ड्यूरिंग ट्रैवल्स, तो अलग से यू डोंट नीड टू हैव कीप स्पून। यू कैन जस्ट फिल इट इनसाइड दिस बॉटल एंड जो बॉटल होता है इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन मटेरियल, तो आप उसे स्क्वीज कर सकते हैं। तो स्क्वीज करने से जो है फूड कम्स आउट इन दैट स्पून एंड यू कैन फीड डायरेक्टली टू योर बेबी। एंड द गिफ्ट बाय रीड अगेन बुक्स फॉर दिस एज ग्रुप इज अ बोर्ड बुक. It is a picture book as well as first word book and known as What's That. In this there are pictures, real photographs, around 40 words and photographs, and this is the note which is given by Nadia. It is for the winners. जब winners announce होंगे I'll send these to them, so you can see there are a lot of pictures. Next gift by Mom's World is a cute little bib. This is very important for toddlers when they are feeding. मतलब वो पूरा mess जो create करते हैं, for that you definitely need a bib.
नेक्स्ट गिफ्ट इज अ बाउल विद अ सक्शन बेस. दिस इज अगेन, ये भी बहुत ही यूजफुल होता है. बच्चे जो हैं, टॉडलर्स जो हैं स्पेशली, खाना खाते वक्त दे जस्ट टर्न ओवर द बाउल. उन्हें जब खुद से खाने के लिए या फीड करने के लिए एनकरेज करते हैं, ऐसे टाइम के लिए दीज बाउल्स आर वेरी यूजफुल. इट हैज़ अ स्पून एंड ऑल्सो देर इज ऑल्सो अ लिड, सो यू कैन कैरी इट for your travels. Also you can cover the food. Plus they have given some more additional spoons, one in red color and one in blue. These are very flexible and very user friendly. Then next, a very cute little gift that मतलब जो मुझे भी बहुत पसंद आया. This is a banana toothbrush and the bristles are very soft, made of silicone. And initially जब आप बच्चों को, toddlers को, आप उन्हें खुद से जब ब्रश करना सिखाते हैं तो फिर then these are very useful. ये बहुत ही soft silicone material का बना हुआ है and bristles are also like they won't hurt your kids' little gums. And because of its cute shape, kids will love it. और बच्चों को that helps in encouraging them to do the toothbrushing on their own. So this is banana toothbrush. So the book for this set by Read Again is Bing's Bedtime Routine. This is a very nice cute book and very useful also. इससे जो है आप अपने बच्चों की नाइट टाइम रूटीन डेवलप करने में इसकी मदद ले सकते हैं. In this there is a cute little bunny named Bing and वो जो है he goes through the bedtime routine. He used to brush his teeth, then he goes to toilet, he takes bath, and then he used to wear pajamas and reads bedtime story. So ये जो है this will help you to develop that bedtime routine with your kid. एंड इसके अलावा बिंग सीरीज में ही बहुत से और भी डिफरेंट रूटीन्स के बुक्स आते हैं. यू कैन फाइंड दैट ऑन रीड अगेन ऑन हर इंस्टाग्राम. Next set of gifts is for 2+ age group of kids and for that I selected a wooden clock toy. ये जो toy है this is there in Vanshu's preschool and उसे वो वहाँ इतना पसंद है, that is why I searched it on internet for you. This is made of wood and इसमें 2-3 activities एक साथ आप करवा सकते हैं. There is a clock, मतलब बच्चों को clock या time का concept भी सिखा सकते हैं. साथ ही there are different shapes, अलग अलग शेप्स जो हैं वो भी बच्चों को यू कैन टीच देम. प्लस नंबर्स तो हैं ही, साथ ही देर इज अ थ्रेड गिवन एंड देर इज लाइक होल्स इन दिस शेप. सो आप जो है बच्चों को बीडिंग वाली एक्टिविटी भी करा सकते हैं जिससे कि उनका जो फाइन मोटर स्किल्स जो है दैट यूज टू गेट डेवलप. And for this age group there are 2 books sent by Read Again Books. इसमें जो पहला book है that is a classic Aesop fable, that is Hare and Tortoise, the race between hare and tortoise that we all know. और इस book में जो है what's special about this book is the illustrations and the way that this classic story is presented is very interesting, जो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे and it's really a nice take on the classic Hare and Tortoise story. Next book in this category by Read Again is Dogs by Emily Gravett. Emily Gravett is actually award-winning kids author and this is a very cute little book for especially for dog-loving kids and dog-loving parents. इसमें जो है देर आर लॉट ऑफ डॉग्स और सिर्फ डॉग्स के नाम ही नहीं, इसमें जो है इसमें बच्चे जो है ऑपोजिट्स का कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं लाइक बिग डॉग एंड देर आर स्मॉल डॉग्स, दे आर गुड डॉग्स, दे आर बैड डॉग्स, दे आर स्ट्राइपी डॉग्स, स्पॉटी डॉग्स. सो दिस इज अगेन अ very interesting book for your little toddlers. Next age group is 3+ or 5+ kids. For them I have like bought for them some wooden puzzles. This is made of wood and these are very sturdy. बच्चे जो हैं इस एज में when they should actually solve puzzles, वो जो हैं उनकी brain development के लिए काफ़ी helpful होता है. problem solving capacity जो है उनकी develop होती है. इन puzzles के top में जो है reference image दिया हुआ है. जब आप puzzles के pieces हटा देते हैं तो फिर से उन्हें build करना थोड़ा सा difficult होता है. तो इफ़ यू सी बच्चे कैन सी दिस रेफरेंस इमेज एंड इस रेफरेंस इमेज को देखकर दे कैन बिल्ड और सॉल्व दिस पजल. सो देर आर मेनी ऑफ देम. ये एक अमेजिंग वे है टू कीप योर किड्स एंगेज्ड. काफ़ी देर तक जो है बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं सॉल्व करने में, तो काफ़ी टाइम तक आप उन्हें एंगेज करके रख सकते हैं. The gift for this age group by Read Again Books is a book named The Princess and the Wizard by Julia Donaldson.
Donaldson. Julia Donaldson, we all know she is such a renowned author. उनका जो ग्रफलो बुक की वो ऑथर हैं एंड दैट इज़ वेरी फेमस. इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं दीज आर ग्लिटरी एंड स्पार्कली एंड बच्चों को ग्लिटर वाली चीज़ें तो कितनी पसंद आती हैं. दिस इज अगेन अ प्रिंसेस स्टोरी. In this, the wizard captures the princess and then she changes into 7 different shapes and colors. तो इसमें जो है बच्चों को एक्चुअली आप केमोफ्लाज का कॉन्सेप्ट जो है इसमें इलेबोरेट किया हुआ है एंड बच्चों को वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा. The princess turns into a blue fish in a blue pond and into a yellow chick in the yellow hay. All these books are mostly imported and mostly from UK. Then the next book for this category is The Tale of Two Bad Mice. This is a hardcover book and this is actually a classic, really a classic. ये जो पहली बार ये स्टोरी पब्लिश हुई थी in 1904 and उसके बाद जो है इसके repeated versions जो हैं पब्लिश हुए हैं. This is also again a very nice quality book. In this, two bad mice visit a doll house और वो वहाँ पर जाके they used to do all the mischievous things. इस book से जो है बच्चों की जो है vocabulary develop करने के लिए this book is very nice. Original illustrations को ही restore किया हुआ है इस book में and they are very nice and colorful. So this is the tale of two bad mice. Read Again Books has done a Go Green initiative by promoting pre-loved books. जब आप pre-loved books लेते हैं तब you are conserving resources and that is why I am also a fan of it. And so these are all the gifts and to win these amazing gifts you have to follow some simple rules. And that first is you have to subscribe to Mom I Am Home, that is my channel, and you have to also follow me on Instagram at @Mom I Am Home, and also my sponsors that is Read Again Books and Mom's World India. साथ ही you have to comment below this video. अगर या तो इस वीडियो या फिर अगर आपने पिछले इसके जो प्री अनाउंसमेंट वीडियो है उस पर कॉमेंट किया है, it's already if you have done then it's fine enough. You will be considered as a participant. And please do mention the age of your kid so that I can keep you in the appropriate category. तो जल्दी से पार्टिसिपेट करिए इस गिव अवे में because it will be open for a limited time till Diwali and post Diwali I will announce the winners. And once again I wish you again a very happy Navratri, Durga Puja and Dashera. May you have a lot of fun in this festive season. और अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं. Till then take care. Bye bye.